Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today I discuss the trigonometric function of multiple and submultiple angles. Multiples and submultiples angle like the cos 2x, cos 2x, 2x, 2 is the multiple of x, 2 is the multiple of x. So the trigonometric function is a multiple and some multiples of angle. So our study, we express the trigonometric function of number of multiple of angle like 2x, 3x, 4x, 5x and so on. So therefore the 2x is a multiples of angle, 2x is a multiple of angle, that is 2 cos square x minus 1 minus 2 sin square x, and that's cos square x minus sin square x. Cos 2x, 2 cos square x minus 1 minus 2 sin square x, and cos square x minus sin square x is the part of multiples of angle. That is sin 2x equal to 2 sin x cos x, that's equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x, 2 tan x upon 1 plus tan square x. So therefore trigonometric function of cos 2x in the form of tan x 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Now here we can find that how can find this formula. First we know that this is the formula of cos 2x and cos 2x. This is a sin 2x and that is a cos 2x. So we can find that if cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y, cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y. Now let y equal to x, then cos x plus x is equal to cos x minus sin x and sin x, that is cos 2x is equal to cos square x minus sin square x.
This is the part of third. Now this change into the cos square x minus 1 minus cos square x. So cos square x minus 1 plus cos square x, that's equal to 2 cos square x minus 1. 2 cos square x minus 1. So therefore we summarize that cos 2x equal to the cos square x minus sin square x. Cos 2x equal to the cos 2x equal to cos square x minus sin square x. If cos square change 1 minus sin square x minus sin square x, that's equal to 1 minus 2 sin square x. 1 minus 2 sin square x. This is the second way. So the cos of 2x is equal to cos square x minus sin square x. Second, 2 cos square x minus 1. And third, 1 minus 2 sin square x. This is the formula of cos 2x. If otherwise, the cosec of 2x change into the tan. The cosec of 2x change into the tan. So it can be written as cos 2x cos square x minus sin square x upon 1, and it can be written as cos square x minus sin square x upon cos square x plus sin square x. So numerator and denominator be divided by cos square x. Numerator and denominator be divided by cos square x. Clear? Now cos 2x equal to cos square x upon cos square x minus sin square x upon cos square x upon cos square x upon cos square x plus sin square x upon cos square x. So therefore 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. This is the formula of cos 2x in the form of tan x. This is the formula of cos 2x in the form of tan x. Now here we find the four formula of cos 2x: cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1,
1 minus 2 sin square x and 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Next, देखो साइन ऑफ 2x 2 sin x cos x equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x. Let sin x plus y equal to, let sin x plus y equal to sin x cos x plus cos x sin x cos y plus cos x sin y sin y. If x is equal to y, if y is equal to x, if y is equal to x, then sin x plus x equal to sin x cos x plus cos x sin x. So that's equal to 2 sin x cos x, 2 sin x cos x sin 2x. Therefore sin 2x equal to 2 sin x cos x upon cos square x plus sin square x. sin 2x equal to 2 sin x cos x, उसके डिनोमिनेटर में 1 है और उसके डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। और अगर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर be divided by cos square x, cos square x. Numerator and denominator be divided by cos square x. So sin 2x is equal to 2 sin x cos x upon cos square x, cos square x upon cos square x plus sin square x upon cos square x. Now the cos divided by cos and we get 2 tan x upon 1 plus tan square x. So
we get the formula of sin 2x, 2 sin x cos x and equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x. Clear? Now next, tan 2x tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x. 2 tan x upon 1 minus tan square x. Clear? Let us suppose that tan x plus y equal to tan x minus tan y upon 1 tan x plus tan y 1 minus tan x tan y tan x tan y. Now y equal to x, then tan x plus x equal to tan x plus tan x upon 1 minus tan x tan y tan x. देखो क्या है, जब हमें tan 2x की फार्मूले लिखने हैं तो tan 2x के फार्मूले को लिखने के लिए हमें 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये tan 2x का फार्मूला है। हम इसको tan a प्लस b या tan x प्लस y, tan a प्लस b और tan x प्लस y के फॉर्म में लिख लेंगे। अब tan x प्लस y का फॉर्म क्या है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। और इस फार्मूले में हम y की जगह पर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह पर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर tan x प्लस x इक्वल टू tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x, सो दैट्स इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, दैट्स इक्वल टू tan 2x, दैट्स इक्वल टू tan 2x। यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आ गई वो tan 2x है। इसी तरह से हम सब एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम सब एंगल भी, मल्टीपल्स ऑफ सब एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन x, cos x, tan x. When we taken the value of 2x into the x, that's
एंगल इज हाफ ऑफ दैट, तो वहाँ पर जो एंगल होगा वो उसका हाफ होगा। यानी हम किसी भी ट्वाइस एंगल को जैसे sin 2x, cos 2x, tan 2x, इसे हम sin x, cos x और tan x में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे सारे फार्मूले वही होंगे, बशर्ते क्या होगा कि हमारे एंगल जो है हाफ हो जाएंगे। जैसे cos 2x, फॉर एग्जाम्पल cos 2x, 2 cos स्क्वायर x minus 1, if the cos x 2 cos square x by 2 minus 1, 1 minus 2 sin square x by 2, cos square x by 2 minus sin square x by 2, sin x 2 sin x by 2 cos x by 2 in the form of 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. So similarly that we find all the formula of that. Clear? Okay, thank you.